In this video, we will learn how to use while loop in Python. It is the simplest of all looping structures. This loop can be applied to a program where the number of iteration is not known beforehand. It means कि अगर हमें पहले से नहीं पता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, so हम यूज़ करेंगे while loop. There are four main components of the while loop: initialization, condition or test expression, loop body, and step value. Initialization. It is used to assign an initial value to the loop control. Next is condition or test expression. In this statement, we will check whether the loop body will be further executed or not. Next main component is loop body. Loop body contains a set of statements that are required to repeat. Next is step value. What is the use of a step value? It is used to keep updating the loop control variable so that final value is achieved and loop will be terminated. Now we will see how can we use while loop in Python on the Python platform. Now we will write a program to print the first 10 natural numbers. In the first statement we can see I equal to 10. What is I here? I is a variable. It holds 0. Next is while I less than equal to 10. This is the test expression. जब तक आपकी I की वैल्यू 10 से लेस होगी तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I फर्स्ट टाइम? इट इज़ 0. 0 is less than equal to 10. This condition is true. So loop body will be executed. Print I. It will print 0. Next is step value. Step value means increment or decrement. So here we are incrementing value by 1. What's the value of I now? It's 1. Again it will check the condition because it's a loop. So it will check the condition, and what's the value of I now? 1. 1 is less than equal to 10. Again this condition is true. What will be printed now? 1. Again step value. What's the value of I now? It's 2. 2 is less than equal to 10. It will print 2. Then I equal to I plus 1. Value of I is 2. 2 plus 1. What's the value of I? 3. Again it will check condition while I is less than equal to 10. What's the value of I here? 3. 3 is less than equal to 10. This condition is true or false? This condition is true. So it will print 3 because we have given here print statement. That's why it will print 3. Then I equal to I plus 1. What's the value of I? 3. 3 plus 1. So what's the value of I now? 4. Again check the condition. 4 is less than equal to 10. It will print 4. Then the value 5. Like this it will print up to 10. 0 to 10 it will be printed. Now we will see the output of this. This is the output. 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now take one more example of while loop. In this program we will print the table of the entered number. जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा हमें उसका टेबल प्रिंट कराना है. In the first statement, n equal to int input enter a number. What is the use of input function? Input function is used to take input from the user. जो भी कोई यूज़र है वो क्या करेगा? एक नंबर एंटर करेगा. By default this number is string, so you will have to convert this number into the integer. That's why you are using int function here. What is the use of int? Int will convert the string into integer, and then after that particular value will be stored in n. So n किस टाइप का हो गया है? अब आपका इंटीजर टाइप का. n में क्या आ गया है? एक नंबर आ गया है. जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो हमारा सेव हो गया है n में. Then after I equal to 1. What's the value of I? 1. We will start our loop with 1 to 10. टेबल हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है? 10 तक. अब क्या प्रिंट कराना है? n. फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू ऑफ n इज़ 11. इट मीन्स कि 11 का टेबल हमें प्रिंट कराना है. 11 इंटू I. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ I एट द फर्स्ट टाइम? 1.
equal to n into I. Value of n is 11 into 1. It will print 11. ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेप वैल्यू यूज़ करनी है. आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई नाउ? इट्स 2. It will check the condition 2 is less than equal to 10. This condition is true or false? This condition is true. Value of n is fixed. n की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हुए, फिक्स है. So it will print 11. Always remember, whenever you give any text or any message in the single quotes, it will be printed similarly. There will be no change. जैसे आपने सिंगल quotes में दिया वो बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, हमने यहाँ पर एस्ट्रिक दिया. सो 11 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? एस्ट्रिक, देन आई. नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आई? 2. एंड 11 इंटू 2 इक्वल टू भी सिंगल कोट्स में है, तो ये भी ऐसे ही प्रिंट हो गया. 11 इंटू 2 इक्वल टू एन इंटू आई. वैल्यू ऑफ एन इज 11. 11 इंटू 2 क्या वैल्यू आ गई है? 22. इट विल प्रिंट 22. 11 प्रिंट हो चुका है, 22 प्रिंट हो गया है. अब नेक्स्ट इंक्रीज द वैल्यू. स्टेप वैल्यू दी हमने यहाँ पर. आई की वैल्यू हो गई है 3. ठीक है, आप चेक द कंडीशन. 3 इज लेस देन इक्वल टू 10. दिस कंडीशन इज ट्रू. नाउ अगेन इट विल प्रिंट एंड 11 इंटू आई. आई की वैल्यू 3. 11 इंटू 3 इक्वल टू 33. Again value of I will. This is the short form of I equal to I plus 1. Don't get confused in this. I plus equal to 1 means I equal to I plus 1. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है I equal to I plus 1 की. इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. If you want to write I equal to I plus 1, you can write that also. That is also correct. It will table till 10. Now let's check the result. What will be the output? It will print the table whatever number user will enter. In this output, user has entered 6 as n. So it will print table of 6. I hope use of while loop is clear now. If you have any doubt, we can discuss in our live class.